I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. Hello friends, welcome to our channel Offbeat Traveling. This is Deepak, your friend, your brother. So guys, इस वीडियो में हम आपको लेकर चल रहे हैं नाग टिब्बा ट्रैक पर। और नाग टिब्बा बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा ट्रैक है। जून का विंडो भी खाली आ रहा था, हमने सोचा क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। सो वी डिसाइडेड टू गो नाग टिब्बा। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर ट्रैक। पंतवारी पहुंच चुके हैं। इट्स अराउंड 6 o'clock। सो यहाँ पर पनवर गेस्ट हाउस है, यहाँ पर रुके हैं, नाइट स्टे यहीं पर ही लेंगे। सो गाइज अभी वॉक के लिए निकले हैं क्योंकि सुबह से गाड़ी में बैठे हुए थे। फ्रेशन अप होके पंतवारी गांव, पंतवारी विलेज का एक वॉक के लिए निकले हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमेशा की तरह फिर से एक बैरियर लग गया। बारिश पड़ रही है लेकिन हम रुकेंगे नहीं, हम चलेंगे। अपन थकेगा नहीं साला।
What else we need? Trekking and the Maggie Point. So friends, this is Goat Village, first campsite. क्या कह रहे थे आप? मरेगा लेकिन झुकेगा नहीं. चलता रहेगा लेकिन झुकेगा नहीं साला. And आओ twist करे. आओ. सुबह 10:30 बजे निकले थे. अप्रॉक्सीमेटली 5 बज चुके हैं और अभी लगभग 1-1.5 घंटा है. नाग मंदिर पर हमारी कैंप साइट है. आज का स्टे वहीं पर ही होगा. साढ़े 6 बजने वाले हैं और हम नाग टिब्बा के नीचे कैंप साइट जहाँ हमारी लगी थी वो नाग मंदिर पर लगी हुई है. आई थिंक 10 मिनट में पहुँच जाएंगे. हम टेंट में आ चुके. तुम्हारे साहब का फर्स्ट टाइम है. बहुत डिफिकल्ट हो रहा है. बहुत ज्यादा ठंड है. एक्चुअली है ना, विंड बहुत तेज है और एक्सपेक्टेड नहीं था इतनी ठंड होगी. बहुत ठंड है. हम बहुत कम कूलर्स लाए थे लेकिन ठंड बहुत है. टेंट में अंदर आके थोड़ा सा राहत मिली है. बहुत छोटा टेंट है. नाउ वी आर गोइंग टू स्लीप. सो वी विल गो टू टिब्बा. फर्स्ट एक्सपीरियंस रियली अमेजिंग यार. तुम्हारा सब कैसा लग रहा है रात में? बहुत शानदार लग रहा है. आपका फर्स्ट टाइम है. बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी और मुझे लग रहा था कि टेंट में शायद ठंड नहीं रुकेगी, लेकिन टेंट का वाकई में ये पूरी तरह से पैक है और बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है. और ऐसा लग रहा है कि ये एक्सपीरियंस मतलब पॉसिबल हो तो हर इंसान को लेना चाहिए. भाग दौड़ भरी जिंदगी में टेंशन में से आके पहाड़ों पे कुछ ऐसा टाइम बिताना चाहिए. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. सुबह के 7 बज चुके हैं. धूप बहुत तेज है. कल बारिश, आज धूप. मॉर्निंग. इट्स नाउ 10 o'clock and today is 19th of June 2022 and today is our summit day. अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर है लेकिन स्टीप बहुत है. बताते हैं ऐसे है. सो देखते हैं कितनी देर में कर पाएंगे. लेट्स मूव.
फ्रेंड्स समिट पहुंच चुके हैं एंड दिस इज चंडी टॉप. यू कैन सी बिहाइंड मी द एलिवेशन इज अराउंड 10,000 फीट. आज हमारा स्टे गोट विलेज में है. नाउ वी आर गोइंग टू नाग टिब्बा टेम्पल. वी विल हैव लंच एंड देन मूव ऑन टू गोट विलेज. हेलो, थैंक्स फॉर खाना भाई, चपाती सब्जी के लिए. थैंक यू वेरी मच. सो फ्रेंड्स अब निकल चुके हैं. आई थिंक 45 to 50 मिनट्स में पहुंच जाएंगे नाग टिब्बा टेम्पल. लंच के बाद गोट विलेज. दो बजे हम लंच करके नाग टिब्बा टेम्पल से गोट विलेज के लिए निकले. अभी 4:30 बज रहे हैं. 4:30 बजे हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे. नाइट स्टे यहीं करेंगे और सुबह निकलेंगे. और अगर अच्छा वेदर हुआ तो रात को भी आपको कुछ क्लिपिंग दिखाएं. मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे इज 20th of June 2022. रात को गोट विलेज रुके थे, आपको बताई था. और यहाँ गोट विलेज में अभी सुबह हमने एक नई जगह एक्सप्लोर करी है जो कि बहुत ही ज़्यादा कोजी और बहुत ही सुंदर है. एंड कैंपिंग इज मच मोर लग्जरियस. सो बात करते हैं यहाँ के ओनर से. लेट मीट द ओनर ऑफ दिस प्लेस एंड ही विल डिस्क्राइब द प्लेस. हेलो सर, व्हाट इज योर नेम? बिमल रमोला. सॉरी, बिमल रमोला. बिमल रमोला. हाँ जी, यस. ओके, तो सर इस जगह के बारे में थोड़ा बताइए और यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं. ये द इवाज रूरल जंगल नाग टिब्बा ट्रैक. तो इसमें हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं, इसमें हमने जैसे परमानेंट वॉशरूम, वेस्टर्न इंडियन, और हमारे जो डॉम टेंट्स हैं उसके अंदर हमने प्रॉपर पिलोज, बैग्स, ये हमारे टेंट्स के अंदर फैसिलिटीज़ हैं. हाइजीन तो प्रॉपर मेंटेन करते हैं. हमारा जो फूड रहता है ऑर्गेनिक रहता है. यहाँ पे लोकल्स फूड हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे रेड राइस हो गया, जंगोरे की खीर हो गया, समा, और अपना मक्के की रोटी, मंडुए की रोटी. और यहाँ पे जितना भी ऑर्गेनिक, हमारा जितना भी हम फूड यहाँ पे यूज़ करते हैं वो सब ऑर्गेनिक रहता है. नो केमिकल्स. प्रॉपर्टी का नाम क्या है सर? द इवाज रूरल जंगल. ओके, एंड विलेज इज गोट विलेज. या थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर.